Madam Speaker, the people of India gave a strong mandate to our government. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, we have given the most decisive, stable and clean government and have undertaken transformational structural reforms. We have reversed the policy paralysis engulfing the nation and have restored the image of the country. इस सरकार की उपलब्धि रही कि हमने बदलने के अथक प्रयास करे और देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया. I can proudly say that India is solidly back on track and marching towards growth and prosperity. We have prepared the foundation for sustainable growth, progress and better quality of life for all our people. We are moving towards realizing a new India by 2022. Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hardworking farmers, supported by the pro-farmer policies of our government in the past 4.5 years, have produced agricultural commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented landholding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है. पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है. देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है. सरकार ने मौजूदा आरक्षण जो कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, उसको पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है. I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate.
required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में।